Welcome to Universe of Knowledge YouTube channel. Friend, this is complete classroom management course. In this course, I will give you 4 options and you have to give me your right answer in 10 seconds. I will give you 10 seconds. You have to tell me your answer in 10 seconds. After that, I will tell you the right answer. The first question is the main purpose of the supervision of teaching should be the मेन पर्पस सुपरविजन टीचिंग का क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर, ऑप्शन बी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़, ऑप्शन सी कैरिंग आउट ऑफ द करिकुलम, ऑप्शन डी अचीवमेंट ऑफ सक्सेस इन एग्जामिनेशन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Option A is the correct answer, advancement of pupil welfare. Supervision should be primarily. बुनियादी तौर पर सुपरविजन को किस तरह होना चाहिए? ऑप्शन ए प्रेस्टीज एंड क्रिटिकल, ऑप्शन बी प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव, ऑप्शन डी कंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिकल. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Option C is the right answer, constructive and creative. The basic purpose of supervision is to help. Option A, teachers in improving methods. Option B, teachers in understanding pupil. Option C, children learn more effectively. Option D, teachers in dealing pupils. The right answer is option C, children learn more effectively. The next question is the elementary school teachers are directly responsible to the option A, Headmaster, option B, DEO, option C, parents, option D, students. Option A is the right answer, Headmaster. The criticism most frequently leveled at school administration is that option A, they like praise, option B, they are too lazy, option C, they fail to provide leadership, option D, they do not know teachers. Option C is the right answer. They fail to provide leadership. The school headmaster are expected to. School headmaster से क्या expect किया जाता है? Option A, put into operation the course of study. Option B, hold daily meetings. Option C, prepare the budget. Option D, all of the above. Option A is the right answer, put into operation the course of study. A supervisor is one who. Supervisor कौन होता है? Option A, provides friendly help. Option B, inspects classrooms. Option C, gives direction. Option D, criticize the teaching method. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, प्रोवाइड्स फ्रेंडली हेल्प. एक दोस्ताना मदद मुहैया करता है आपको. द इफ़ेक्टिव सुपरविजन इज़ इंडिकेटेड बाय. ऑप्शन ए, गुड रिलेशंस बिटवीन टीचर एंड सुपरवाइजर्स. ऑप्शन बी, हेल्पिंग टीचर इन देयर टीचिंग. ऑप्शन सी, हेल्पिंग टीचर्स बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट. ऑप्शन डी, क्रिटिसाइजिंग टीचर्स लेसन्स.
Option C is correct. Helping teachers becoming more self-sufficient. The school policy should be determined by. Option A, the professional educators. Option B, headmasters. Option C, citizens. Option D, citizens and educators. Option D is correct. Citizens and educators. The chief responsibility of the principal is. प्रिंसिपल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अहम जिम्मेदारी है, वो क्या होता है? ऑप्शन ए ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्टर द गाइडेंस प्रोग्राम. ऑप्शन बी प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान. ऑप्शन सी मेंटेन स्कूल रिकॉर्ड्स. ऑप्शन डी हैंडल डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स. Option B is correct. Provide leadership in instructional plan. Indication of democratic attitude is. इसमें किस में डेमोक्रेटिक एटीट्यूड का इशारा आपको मिलता है? डेमोक्रेटिक मीन्स जमहूरियत. ऑप्शन ए इक्वल राइट्स. ऑप्शन बी पार्टिसिपेशन. ऑप्शन सी कोऑपरेशन. ऑप्शन डी all of the above. ऑप्शन डी all of the above, क्योंकि इक्वल राइट्स भी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड का एक इंडिकेशन है, जिसमें सबको बराबर राइट्स दिया जाता है. पार्टिसिपेशन भी इसी तरह, कोऑपरेशन. इसी वजह से ये तीनों ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, सॉरी ये मीम्स नहीं है, ये मीन्स है. एडमिनिस्ट्रेशन का माना क्या है? ऑप्शन ए टू लुक आफ्टर. ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट. ऑप्शन सी टू रन. ऑप्शन डी टू एस्टेब्लिश. Option A is correct. To look after. Administration means to look after. The function of educational administration and management is. Option A instructional tasks. Option B non-instructional tasks. Option C both A and B. या option D none. Option C is right answer. Both A and B. Provision of good educational environment is. Option A instructional tasks. Option B non-instructional tasks. Option C both A and B. Option D none. Option A instructional tasks. Arrangement of physical resources is. Option A instructional tasks. Option B non-instructional tasks. Option C both. Option D none. Option C both instructional tasks and non-instructional tasks. The main types of administration are. Administration के main types कितने हैं? Option A 2, Option B 3, Option C 6 and Option D 9.
ऑप्शन बी 3 किस्म के एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन की किस्म नहीं है। ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन या ऑप्शन डी लेजियस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से एडमिनिस्ट्रेशन की किस्म नहीं है, वो है ऑप्शन है इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का खासियत नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन है रूडनेस, ऑप्शन बी सप्रेशन द सबऑर्डिनेट्स, ऑप्शन सी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ऑप्शन डी शेयरिंग। ऑप्शन डी शेयरिंग। फ्रेंड्स, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन वो एडमिनिस्ट्रेशन की वो किस्म है जिसमें आप हुक्म चलाते हो, आप किसी चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसमें आप रूड हो सकते हो, आप अपने सब ऑर्डिनेट को सप्रेस कर सकते हो, आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हो, लेकिन अपने जो मालूमात है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ पर बेस करता है। ऑप्शन ए डिक्टेटरशिप, ऑप्शन बी म्यूचुअल शेयरिंग, ऑप्शन सी नॉन इंटरफेरेंस, ऑप्शन डी नन। ऑप्शन है डिक्टेटरशिप। जो अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिक्टेटरशिप पर बेस करता है। इसमें आप डिक्टेटर होते हो, एक तरफा जो ऑर्डर्स देते हो, इसमें आवाम का कोई राय नहीं होता है। डिक्टेटरशिप इसी को कहते हैं। ऑप्शन बी में म्यूचुअल शेयरिंग है, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होता है, दो तरफा शेयरिंग होता है जिसमें दोनों फ़ायदे में होते हैं। ऑप्शन सी में नॉन इंटरफेरेंस, जिसमें आप इंटरफेरेंस नहीं करते हो। ऑप्शन डी तो नन है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, डेमोक्रेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये किस चीज़ पर बेस्ड करता है। ऑप्शन है डिक्टेटरशिप, ऑप्शन बी म्यूचुअल शेयरिंग, ऑप्शन सी नॉन इंटरफेरेंस, ऑप्शन डी नन। इसमें ऑप्शन बी म्यूचुअल शेयरिंग करेक्ट है। लेजियस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, लेजियस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन की एक किस्म है, ये किस चीज़ पर बेस करता है। ऑप्शन है डिक्टेटरशिप, ऑप्शन बी म्यूचुअल शेयरिंग, ऑप्शन सी इंटरफेरेंस, ऑप्शन डी नन। लेजियस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन की वो किस्में जिसमें नॉन इंटरफेरेंस, किसी चीज़ में अमल दखल नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। बॉस इज़ राइट इज़ द फीचर ऑफ, ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी लेजियस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। बॉस इज़ राइट ये किस चीज़ का फीचर हो सकता है जिसमें आप कहते हैं कि बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, बॉस जो भी कहता है वो राइट है, वो सही की सही कहता है, आप उसको मना नहीं कर सकते किसी चीज़ को। ऑप्शन बी अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन की किस्म में आप कह सकते हैं कि बॉस इज़ राइट।
Respect of opinion is the feature of. किस में आप दूसरों की ओपिनियन की आप रिस्पेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी लेजियस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन. डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप दूसरों की जो ओपिनियन है, राय है, उसकी आप एहतराम करते हो. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट केयर्ड इन. ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी लेजियस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन. Option D is correct, laziest fair administration. Literal meaning of supervision is option A superior knowledge and power, option B superior knowledge and service, option C superior efforts and services, option D none of these. Option A superior knowledge and power. In teaching learning process, supervision is usually carried out by option A principal, option B teacher, option C parents, option D society. Option A is correct, principal. Assessment of how well a school is performing is option A administration, option B supervision, option C inspection, option D all of the above. Option B is correct, supervision. According to five elements of administration are. फायोल एक जो साइकोलॉजिस्ट था जिसने क्लासरूम मैनेजमेंट पर काम किया था, उसके मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन के कितने एलिमेंट्स होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 5. सॉरी, इसमें 5 दो जगह रिपीट हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 तो इसमें से नहीं हो सकता. ऑप्शन डी 2, ऑप्शन सी की जगह 7 था, लेकिन सॉरी ये गलत टाइप हो गया है, तो उसमें आपने क्या करना है, अपना करेक्ट आंसर चूज़ करना है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. 4 एलिमेंट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के फाइल के मुताबिक. अकॉर्डिंग टू गलिक एंड अर्विक, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर. इसी तरह फाइल की तरह गलिक एंड अर्विक भी दो साइकोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्लासरूम मैनेजमेंट पर काम किया था. उनके मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन के कितने एलिमेंट्स होते हैं? फाइल के मुताबिक 4 थे. इसमें ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9. Option A 7. To make arrangements is part of option A planning, option B organizing, option C commanding, option D coordinating. Option B organizing. Execution of plans and decisions is the part of option A planning, option B organizing, option C commanding, option D coordinating.
Option C is correct, commanding. To bring harmony among all the elements of program. Option A, planning. Option B, organizing. Option C, commanding. Option D, coordinating. Option D is correct, coordinating. School budget includes option है development of expenditure, option B है non development expenditure, option C both A and B, and option D none of A and B. Option C is correct, both A and B. Non development budget includes option A salaries, option B running expenditures, option C maintenance of building, option D all of the above. Option D all of the above. BM stands for option A budget money, option B budget monitoring, option C budget material, option D budget manual. Budget manual is correct. Leadership is the ability, option A to influence, option B to motivate, option C to achieve organizational goals, option D all of the above. Answer is option D all of the above. Staff development means option A recruiting staff, option B training staff, option C increasing staff, option D decreasing staff. Option B is correct, training staff. Who is called father of scientific management theory? Option A Fredrick Tylor, option B है Henry Fayol, option C है Thierry and Franklin, option D है Alton Mayo. Right answer is Fredrick Tylor. Development alternatives is a step of option A organization, option B planning, option C direction, option D control. Option B is correct, planning. How funds in a given period will be obtained and spent has option A allocation, option B expenditure, option C budget, option D receipt. Option C is correct, budget. Friends, this was the first part of the video. I will complete this course and I will upload the second part of the video. Wait for the second part of the video.